Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Shri Advaita Gadadhar Shri Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Sadi Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radha Kanta Namaste Namaste Taptaganjan Gaurani Radhe Vrindavane Krishnanasate Devi Pranamami Hari Priye. Shri Radhe Gokananda Bhagwan Ki Jai. Jai. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Rinaji. Hare Krishna, Ajay. Hare Krishna, Sumit. Cool. So I hope everyone had a nice long Thanksgiving week. We are back to Srimad Bhagvatam. So we have been reading Cantos 1, Chapter 13 and Shlok 57. Right? So इस अध्याय में, just to revise, is what's happening in this. Vidur Maharaj, Mahatma Vidur has come back to Hastinapur और फिर धृतराष्ट्र महाराज को समझाकर धृतराष्ट्र महाराज and Gandhari Maharani, they left Hastinapur and they went to towards Himalayas, and then Yudhishthira Maharaj is wondering what's going on, and just at that time Dev Rishi Narad appears, and then Dev Rishi Narad is explaining Yudhishthira Maharaj that no need to worry, what's happening is pretty clear, and he's explaining what's going on, right? So at this point, Dhritarashtra Maharaj is already in Himalayas, and let's see what happens next. So start with Shlok 57. Reena ji, aap padhenge? Yes, we are. Sava Adyatnath Rajan Paratah Panchame Yahani Kalevaram Hasyati Svam Tacha Bhasmi Bhavishyati. O King, he will quit his body most probably on the 5th day from today, and his body will turn to ashes. Hare Krishna. Hare Krishna. So who is saying this? For Dhritarashtra. Narad Muni. Dev Rishi Narad is saying this for Dhritarashtra Maharaj and to Yudhishthira Maharaj, right? Yeah. So he's saying like on the 5th day, Narad Muni knows everything, right? Dev Rishi Narad. And he says from 5th day from today, his body will turn to ashes, like he himself will turn to ashes, right? That's a mystic power. Anil ji? Dayamane Agni Virdehe Patyu Patni Saho Taje Bahistita Patim Sadhvi Tamagni Manu Vekshati. While outside observing her husband, who will burn in the fire of mystic power along with his thatched cottage, his chaste wife will enter the fire with rapt attention. Hare Krishna. Right. And whom are we talking about here? The chaste wife? Gandhari. Gandhari. Right. So Gandhari is the most pativrata, right? And she will, along with Maharaj Dhritarashtra, will get into the fire. Okay. Vidurastu tadakshayam nishabhyam kurunandan harshok yutast smad
Ganta Tirth Nishivaka. Vidura, being affected with delight and grief, will then leave that place of sacred pilgrimage. Hare Krishna. Hare Krishna, right? So, and Vidur, of course, Vidur Mahatma, he came to take them, but then he will also, so I think let's read this particular paragraph. Soham, Hare Krishna. Hare Krishna. Can you read this? Vidura was astonished to see the marvelous departure of his brother. Dhritarashtra, as liberated yogi, for in his past life he was much attached to materialism. Of course, it was only due to Vidura that his brother attained the desirable goal of life. Vidura was therefore glad to learn about it, but he was sorry that he could not make his brother turn into a pure devotee. This was not. Yeah, and then you can read from here. Okay. But ultimately, the result of such mercy certainly depended on the will of Supreme Lord. In the present life, therefore, Dhritarashtra attained liberation only, and after many such liberated states of life, one can attain to the stage of devotional service. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much, sir. Very nice. So what it's saying is Mahatma Vidur wanted Dhritarashtra Maharaj to be like turn into the devotional service. But because of his attachment to the materialism, as we all know, he could not turn into a devotee. But he still had that mystic power, and as a liberated yogi, he could burn himself into the ashes, right? But what's being said is that, the most important thing here is this, right? Therefore, Dhritarashtra attained liberation only, but what's being said is after many such liberated states of life, one can attain to a stage of devotional service. So that is so much important, like it is how difficult it is to really get into the devotional service. It's not easy to get into the bhakti yoga, right? So a lot of, like, as we also see, a lot of people, start realizing their soul, they do a lot of meditation, and they think they are the light, right? This whole world is light and this whole world is ocean, we'll merge into that. Right? So there are so many, and they do great advancement, right? They do great advancement in understanding what the soul is to some extent, right? But they then forget that there is a supreme soul which is separate to soul, even though there is a link of soul to the supreme soul. So that can be attained only by the devotional service. And that is why it is so much important here. It says after many such liberated states of life, like as you progress in life, birth after birth, then one can attain to a stage of devotional service, which is Shravanam, Kirtanam, chanting, and so on and so forth. So it's so difficult to attend the devotional service, but that's the way, that's an advancement of a devotee to get to that stage. Ajay? इत्युक्ता धारु रुहत स्वर्ग नारदः सहतुम्बरु युधिष्ठिरो वचरस्तस्य हृदि कल्पाजाच्छुचः. Having spoken thus, the great sage Narada, along with his Veena, ascended into outer space. Yudhishthir kept his instruction in his heart and so was able to get rid of all lamentations. Hare Krishna. Hare Krishna. So of course, as we all know, Devrishi Narad is the only one who can travel across Antariksh everywhere from this lok, those 14 loks, and beyond that, Swarg lok and to Golok, right? So Narad and Sahat Tumbru is the Veena. So Devrishi Narad gave this message to Maharaj Yudhishthira and then he went back. So,
And that actually completes thus ends the Bhakti Vedanta purpose of the first canto, 13th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Dhritarashtra Quits Horn. So, bolo Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. So it's amazing, right? Like just in few months, we have completed now 13 chapters of Srimad Bhagavatam. Of course, we have a long way to go. But then I think maybe this is the time for some quiz, right? So what all have we seen in like those 13 chapters? So even though we have read only 13, we have read so much, right? Don't you feel like we have come across so many things, right? Can you mention a couple of things which were really heart-touching and more devotional, and also we got the knowledge? Yeah. Like if you remember, Devrishi Narad himself came to give this Updesh to Ved Vyasji, right? Why to manifest Srimad Bhagavatam. Yeah. So there he praised Lord Krishna, and then why there is a need for a devotional Puran like Srimad Bhagavatam. Yeah. Then we saw Bhishma Stuti, isn't it? We saw Maharani Kunti's Stuti. We saw the people in Hastinapur praying to Lord Sri Krishna and describing Lord Sri Krishna. We saw in Dwarika people gathering and welcoming Lord Sri Krishna. We saw how the rishis who gathered around Bhishma Pitama talking about and praying to Lord Sri Krishna, right? Lord Krishna left for Dwarka. Yeah, and that's the next. Actually, that's the Oh. yeah. So yeah, in between, when Lord Krishna went to Dwarka, we saw how Hastinapur was praising Lord Sri Krishna, right? And then when he arrived at Dwarka, then also we saw how he was welcomed in Dwarika. And then meanwhile, of course, we saw all these different yugas. We build up knowledge of the summary of all the incarnations, 24 incarnations. Yeah. So there's so much we have covered in like just few months. So like full of knowledge as well as full of devotional service. And of course, we are only at chapter 13, and there are how many adhyayas are there? Remember? 300. Right, 332. 32. Yeah. So, Gajendra, I want to say one thing. I think we only read 13 chapters, and we are going to be on 14th now. Right. But in these 13 chapters, in every shlok, in most of the descriptions of Lord's, praise or his avatars or his Leela, one thing is very clear. We all know that he's a supreme Lord, right? He's the Godhead. But this book and these shloks, even in 13 chapters, amply proves that he is the supreme Lord, with evidence, with all the details that is being given. So it's a telling thing that just 13 chapters we've read, and it has reinforced, at least my view, very, very well, it was there before that, Lord Krishna is the supreme personality of the Godhead. And in so many ways it has been described here. And so many people have praised him, and prayed for him. And so I think it's a telling thing. The book is not only a book; it's opening your mind and making you more, trusting the Lord and his leelas. So it's very telling. It's just 13 chapters, but it has, at least my viewpoint, has been completely reinforced again that he is the supreme Lord. And in fact, that's right, Mukesh, thank you. And then also in between, we saw like how this world has been created, right? Remember, we saw Garbhodakshaya Vishnu, Karnodakshaya Vishnu, Kshirodakshaya Vishnu, and how everything has been originated from Lord Sri Krishna in Adhyay 3rd, where we read even more, right? So shlok after shlok, this devotional service, and just now in last shlok we read, like devotional service is not easy to get, right? It's not easy. It's after so many births and tapasya and liberation and all that, you start getting into the devotional service. And that's really Srimad Bhagavatam. So, and then we of course read in Purushottam month, we read in Kartik month. So, that has an added devotion. So, which is really nice. So since we are talking about Kartik month and we actually only have 10 more minutes, I actually wanted to cover
story of Tulsi Maharani. I think we'll pause at the Srimad Bhagvatam here. We'll start chapter 14, and that chapter 14 is actually the disappearance of Lord Sri Krishna. Okay, so from Dwarika, now Lord Krishna is going back to his abode. So we'll read about that in chapter 14. And there are 19 chapters in the first canto. So we have like 5 more chapters for the first cantos, which talks about the creation and manifestation of Srimad Bhagvatam, where Parikshit Maharaj is born and how Ved Vyasji and the Sukdev Goswami Ji Maharaj is reciting this to Parikshit Maharaj, right? So next chapter we'll read about disappearance of Lord Krishna. But I thought since we are talking about the devotion, and last week was Tulsi Shaligram Vivah. Everyone is aware of that, right? So I think a lot of us also celebrate the Tulsi Shaligram Vivah, and also if you go to the temples, you will see that. So I thought we could actually hear that story. I mean, in between Srimad Bhagvatam, I think most of us know about Radhe Rani, right? We always know about Radhe Rani. And then we always pray to Radhe Rani and RadheGovind. I think it's also important to really see the story behind Tulsi Maharani and Vrinda Devi. So we know, some of us know the whole story, some of us know half. So I thought this would be a nice one to play that out. Yeah, is that good? Yeah. So let's hear that and see who Tulsi Maharani is, who is Vrinda Devi, and what is this whole Vrindavan about, and why we need to pray to Tulsi Maharani, and what is the significance of that, right? So this is very nicely explained into this. हरे कृष्ण। तुलसी शालिग्राम विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी शालिग्राम विवाह के विषय में कुछ कहने से पूर्व आइए जाने कि कौन है तुलसी महारानी और क्यों उनकी पूजा की जाती है। कुछ प्रमुख तथ्यों को हम सबको जानना चाहिए। जैसे कि हम सभी तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, कंठ में तुलसी की माला धारण करते हैं जिसे कंठी कहते हैं, जो तुलसी पौधे की काट से ही निर्मित होती है। तथा जब भी हम भोजन बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र डालते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। वह उनके बिना भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते। आइए जानते हैं इस विषय में। तुलसी विवाह की कथा जो बहुत ही विस्तृत है और आज हम उसे संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करेंगे। तुलसी शालिग्राम विवाह प्रसंग अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से हुआ। आज हम जो लीला आपको बताने जा रहे हैं उसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। परम भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन, जो सभी बैकुंठ लोकों में सर्वोपरि है, जहाँ भगवान की लीलाएं अनवरत रूप में चलती रहती हैं, वहाँ तुलसी महारानी, जिनका गोलोक में नाम वृंदा है, उनके आदेश से वे कुंज जहाँ श्री माधव अपनी लीलाओं का आनंद उठाते हैं, वे भौरों, खिलते हुए फूलों, हिरण, मधु एवं अन्य वस्तुओं द्वारा भव्य रूप से सुशोभित हैं, अलंकृत हैं। वृंदा देवी के द्वारा सेवित ही श्री वृंदावन है, जहाँ सारे पशु पक्षी, शुकसारी, कोकिल, मयूर इत्यादि वृंदा देवी के आज्ञाकारी हैं एवं वे राधा कृष्ण की लीलाओं को देखकर नृत्य करते हैं, वह सुंदर मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अतः वृंदा देवी श्री कृष्ण और राधा रानी की सारी दिव्य ब्रज लीलाओं की व्यवस्था करती हैं। वह राधा कृष्ण मिलन करवाना ही वृंदा का एकमात्र कार्य है। और वे वृंदा जब भौतिक संसार में आती हैं तो कहलाती हैं तुलसी। आइए जानते हैं कैसे। श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों की प्रमुख हैं।
वे अपनी सखियों को भगवान श्री कृष्ण से मिलवाती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमें किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होता है तो हमें उनके प्रिय व प्रमुख व्यक्ति के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। यही शिष्टता है व यही आचार भी है। परंतु एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि वृंदा देवी जब भगवान की लीलाओं हेतु किसी मनोरम स्थान की खोज में थी, तभी वे वहां पर भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं, जिनके स्पर्श से भावातिरेक में वे बेहोश हो गई। जब इस विषय में राधा रानी को पता चला तो क्रोधित हो वे वृंदा देवी को श्राप देती हैं कि तुम्हारा ये आचरण निम्न जीवों की भांति है, जो मनमाना व्यवहार करते हैं। अतः तुम भौतिक संसार में जाओ, वह जब वहां रहकर तपस्या इत्यादि से शुद्ध हो जाओ तब वापस आना। वृंदा देवी इसे स्वीकार करती हैं। वही भगवान श्री कृष्ण भी थे। वे वृंदा से कहते हैं कि पृथ्वी पर रहते हुए तुम श्री विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना। वह ये सब सुनते हुए हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि तुलसी महारानी अर्थात वृंदा देवी गोलोक में श्रीमती राधा रानी की विस्तार है और आंशिक विस्तार के रूप में बैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान है। वे कोई साधारण जीव नहीं है। और तब लीलानुसार उन्होंने राजा धर्मध्वज व माधुरी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह क्योंकि उनका सौंदर्य अद्वितीय व अतुलनीय था तो साधु संतों ने इस कारण उनका नाम रखा तुलसी। वह थोड़ी बड़ी होने पर ही वे बद्रीनाथ के पर्वतीय क्षेत्रों पर गईं तो वहां जाकर घोर तपस्या की, जिससे अंत में ब्रह्मा उन्हें वरदान देने के लिए आते हैं। वह प्रश्न करते हैं कि तुम किस कारण इतना घोर तप कर रही हो। तब तुलसी उन्हें विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने का अपना संकल्प कहती हैं। तब ब्रह्मा उन्हें बतलाते हैं कि गोलोक में कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों में से एक थे सुदामा, जो कृष्ण का ही आंशिक विस्तार थे। वे तुमसे विवाह करना चाहते थे। वर्तमान में वे राधा रानी के श्राप के कारण दानवों के मध्य रह रहे हैं और शंखचूड़ के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्याएं की हैं व पृथ्वी पर प्रभुत्व के लिए भी कड़ी तपस्या की है। इसलिए आप उनसे विवाह की स्वीकृति दे दीजिए और बाद में किसी तरह दैवी शक्ति के विशेष प्रबंध द्वारा आपको सौंदर्यवान नारायण पति रूप में प्राप्त होंगे। तब इस प्रकार शंखचूड़ व वृंदा देवी का विवाह होता है। कालांतर में अपने शक्ति बल व प्रभाव के आधार पर शंखचूड़ ने लगभग संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया। यहाँ तक कि देवताओं को अनेक बार त्रस्त किया, परास्त किया। तब सभी देवता शिवजी के पास गए। शिवजी ने शंखचूड़ को समझाया, परंतु वह न माना। परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बहुत लंबे समय तक चला। और फिर उसके अंत के लिए जब शिवजी त्रिशूल उठाते हैं, जो बड़े बड़े महान व्यक्तियों द्वारा भी सहन नहीं हो सकता था, परंतु तभी एक दिव्य स्वर्गिक ध्वनि गूंजती है कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जब तक शंखचूड़ कवच पहन रखेगा, वह उसकी पत्नी पातिव्रत्य बनाए रखेगी, वह न तो मरेगा और न ही बूढ़ा होगा। इसलिए फिर दिव्य योजना अनुसार विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ से कवच मांगते हैं, जो वह दे देता है, तथा उसके पश्चात विष्णु भगवान शंखचूड़ का वेश बनाकर उसके महल में जाकर तुलसी के साथ संग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध स्थल में शंखचूड़ मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी बीच तुलसी महारानी को संदेह होता है तो वे क्रोधित हो प्रश्न करती हैं कि कौन हो तुम। तब भगवान विष्णु अपने सुंदर स्वरूप में प्रकट होते हैं, जिसे देख वृंदा पहले तो अपनी चेतना खो बेहोश हो जाती हैं, परंतु पुनः चेतना आने पर विष्णु भगवान को यह श्राप देती हैं कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है। आपका हृदय पत्थर के समान है, अतः मैं आपको पत्थर बनने का श्राप देती हूँ। दुख व निराशा से अत्यधिक प्रभावित होकर परेशान तुलसी जब जोर जोर से रोने लगी और बारंबार शोक करने लगी, तो दया के सागर नारायण उन्हें सांत्वना देते हुए पूर्व जन्म की व उनकी तपस्या और शंखचूड़ के विषय में भी सब सत्य बतलाते हैं। वह कहते हैं कि उसी कारण मैंने ये सब किया। अब तुम अपनी ये संसारी देह त्याग कर एक आध्यात्मिक देह धारण करो और मुझसे विवाह करो, वह लक्ष्मी के समान बन जाओ। तुम्हारी देह भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक गुणवान, शुद्ध, निर्मल नदी गंडकी के नाम से विख्यात हो जाएगी।
तुम्हारे केश पवित्र वृक्षों में परिवर्तित होंगे और चूंकि उनकी उत्पत्ति तुमसे होगी इसलिए वे तुलसी के वृक्ष के नाम से जाने जाएंगे। वह आगे भगवान कहते हैं कि तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर भारतवर्ष में रहूंगा, गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वह तब तुलसी की महिमा करते हुए भगवान नारायण इस प्रकार कहने लगे कि शहद से भरे हजारों बर्तन भेंट करने से वे इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने वे एक तुलसी पत्र भेंट करने से होंगे। यदि मृत्यु के समय कोई तुलसी के पत्ते का जल पीता है या उसे प्राप्त करता है तब वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ चला जाता है। जो कोई भी तुलसी पत्र से प्रतिदिन मेरी आराधना करेगा वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों के आशीर्वाद का फल प्राप्त करेगा। और इस प्रकार अनगिनत रूप से विविध लाभों का वर्णन भगवान ने किया। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है, जहाँ नारद मुनि के इस प्रश्न पर कि शुद्ध एवं पवित्र तुलसी देवी आपकी पत्नी कैसे बनी, भगवान नारायण ऋषि यह वर्णन करते हैं। वह अंत में कहते हैं कि इस प्रकार देवी तुलसी शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। वह कमलापति भगवान श्री हरि उन्हें साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। वह यही तुलसी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में रहती हैं, जो कि उनकी इच्छा थी, क्योंकि वे भगवान की परम भक्त हैं। वह शुद्ध भक्तों का स्वभाव होता है सदैव ही भगवान के चरणों में रहकर उनकी महिमा गाना, गुणगान करना, कीर्तन करना, प्रार्थना करना, उनका धन्यवाद करना व कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रशंसा करना कि उन्हें भगवान के श्री चरणों का संग प्राप्त है, जो परम प्रेम है, जिसमें परम शांति है, जिसमें परम शक्ति और परम सामर्थ्य के साथ साथ परम आनंद भी है। और जब आपको ये मिल जाता है तो फिर सब कुछ मिल जाता है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि राधा कृष्ण दिव्य युगल का सेवा लाभ अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। इसकी पूर्ति हेतु श्री वृंदा देवी का कृपा लाभ करना परम आवश्यक है और इसको प्राप्त करने का